हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमन। आज हम एसएसटी के जो हमारे टीचिंग मॉडल बेस्ड लेसन प्लान थे, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो करेंगे कंप्लीट। और इसी के साथ जो हमारी टीपी की एसएसटी की लेसन प्लान की फ़ाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक में हम 3 लेसन प्लान्स करेंगे। नंबर 1 होगा हमारा डिसास्टर मैनेजमेंट, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 3 नेचुरल रिसोर्सेज। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आएगा पीटीस रोल नंबर, जो आपका क्लास में बीएड टाइम रोल नंबर था वो यहाँ पर मेंशन होगा। फिर आएगा सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, टॉपिक डिसास्टर मैनेजमेंट, मेथड हमने यूज़ किया इंडक्टिव थिंकिंग का। क्लास रहेगी हमारी 8th, डेट जिस दिन आपने ये टॉपिक अपनी टीपी के दौरान क्लास में करवाया था उस दिन की डेट यहाँ पर मेंशन होगी। ड्यूरेशन मीन्स आपके पीरियड की लेंथ कितनी थी। कईयों की तो 30 होती है, कईयों की 35 होती है, 40 भी होती है। आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखें। यहाँ पर मैंने 35 लिखी है। एम्स नंबर 1, student will be utilize scientific process for concept formation. Number 2, students will be develop logical thinking. Next रहेगा हमारा expected behavioral objectives. At the end of the lesson students will be able, number 1, enlist different examples of disasters. Number 2, classify different types of disasters. 3, label groups on the basis of common attributes of different examples. Number 4, define the types of disasters by writing their basic characteristics. 5, generate more examples of different types of disasters. Resources: teacher made notes, whiteboard, marker, visual aids and data set. इसके बाद आएगी हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक। स्ट्रेटजी 1, कंसेप्ट फॉर्मेशन फेजेस, टीचर ए एक्टिविटी, प्यूपल्स एक्टिविटी। यहाँ पर हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसकी 3 पार्ट्स हैं। फेज नंबर 1 रहेगा हमारा लिस्टिंग। स्टेप नंबर 1, डेवलपमेंट मीन्स ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर नोटबुक्स एंड राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसास्टर्स प्रिवेलिंग इन द एनवायरनमेंट। Pupils activity, students will purpose a list of various disasters: floods, earthquakes, tsunamis, explosions, volcanic eruptions, oil spills and fires. Phase number 2, grouping. Step number 2, teacher will say we have a lot of different types of disasters here. What is common in the different examples in this list? Pupils activity. Students try to categorize examples into groups based on some similarities. Phase number 3, labeling. Step number 3, teacher asks students to label, categorize they made, create a sample grouping there as a class, talk about why they can be considered a group or then create a name for the group. Pupils activity. Students try to find appropriate labels for different groups that students can label are disasters which are created by human, disasters which occurs naturally. Phase number 4, data collection or data retrieval chart. Step number 4, student-centered activity. Teacher at this stage motivates students to reframe their labels. Pupils activity. Students can revise their list and regroup under the labels discussed with teacher. Strategy 2, interpretation of data. Phase number 4 and 5, identify and explain. Teacher activity. Teacher asks the students to mention the basis on which they have categorized the transport, dimensions and relationships. What similarities do you see in various groups? What are the points of distinction among these groups? Phase number 6, make inferences. Teachers help the students to find the type of disaster management. Pupils activity. Students ponder over the ideas and they make possible hypotheses.
Phase number 7, prediction. Teacher will ask the students to counter check the characteristics enlisted for each type of disaster. What would happen if management of these disasters would not be done? Pupils' activity. Students try to think and find out that there may be many problems in today's society. Phase number 8, explain. Teachers ask the students to verify the answer key by spotting your answer. Last रहेगी हमारी टेस्टिंग मीन्स ऑफ एवैल्यूएशन. राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसास्टर्स. लेसन प्लान नंबर 2 हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन. हमारा मेथड इंडक्टिव थिंकिंग. क्लास रहेगी हमारी 8. रेस्ट पार्ट हमारा सेम रहने वाला है. एम्स नंबर 1, स्टूडेंट्स विल बी यूटिलाइज साइंटिफिक प्रोसेसेस फॉर कंसेप्ट फॉर्मेशन. 2, स्टूडेंट्स विल बी डेवलप लॉजिकल थिंकिंग. Expected behavioral objectives. Number 1, enlist different examples of transport. 2, classify different ways of transport. 3, label groups on the basis of common attributes. 4, define the type of transport by writing those characteristics. Resources. Teacher made notes, whiteboard, marker, visual aids and data set. Presentation of the topic. Strategy number 1, concept formation. Phase number 1, listening. Development teacher asks the student to open their notebooks and write down different ways of transportation. सॉरी यहाँ पर लिसनिंग नहीं आएगा, लिस्टिंग आएगा. जो मैंने लास्ट लेसन प्लान नंबर 1 में किया था लिस्टिंग, मतलब बच्चों को लिस्ट बनानी होगी. Pupils' activity. Students will be prepare a list of different transportation. Phase number 2, grouping. Teacher will say we have a lot of different transports. What is common in this list of examples? Pupils' activity. Students try to categorize examples into group based on some similarities. Number 3, labeling. Teacher asks students to label categories they made to create a sample group together as a class table. Talk about. Pupils' activity. Students try to find appropriate labels for different groups. Phase number 4 or 5. Teacher asks the students to mention the basis on which they have categorized the transport. Pupils' activity. Students will be verbalize their observations and they may give their answer. Phase number 6. Teacher helps the students to define the ways of transportation. Pupils' activity. Students will make inferences with guidance by teachers. Next, strategy number 2, application of principles. Phase number 7. Teacher will ask the students to counter check the characteristics enlisted for each type of transport. Students ponder over the ideas and make possible hypotheses. Phase number 8 and 9. Teacher asks the students to verify the answer by spotting your answer. Pupils' activity. Students try to think and find out that there may be many problems in today's society. Next one, testing or evaluation. Write about different means of transport. Assignment. Categorize various types of transport and write merits and demerits of each type of transportation. लेसन प्लान नंबर 3, जो कि हमारा लास्ट लेसन प्लान होगा हमारी एसएसटी की टीपी फाइल का. हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज. हमारा मेथड इंडक्टिव थिंकिंग. क्लास रहेगी 8th. रेस्ट पार्ट हमारा सेम है. एम नंबर 1, स्टूडेंट्स विल बी यूटिलाइज साइंटिफिक प्रोसेस फॉर कंसेप्ट फॉर्मेशन. 2, स्टूडेंट्स विल बी डेवलप लॉजिकल थिंकिंग. एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स. नंबर 1, enlist different examples of vegetation. 2, classify different types of natural vegetation. 3, label groups on the basis of common attributes. 4, define the type of transport by writing the characteristics. Resources. Teacher made notes, whiteboard, marker, visual aids, data set. Presentation of the topic. Strategy number 1, concept formation. Phase 1, listing. Step number 1,
डेवलपमेंट टीचर, स्टेप नंबर 1 है हमारी डेवलपमेंट. टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर नोटबुक्स एंड राइट डाउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. Pupils activity, student will prepare a list of different types of vegetation and write them on a paper. Phase 2 grouping. Teacher will say we have a lot of different transport here. Student will try to categorize examples into the groups based on some similarities. Phase number 3 labeling. Teacher asks the student to label, categorize the made sample group together as a class, talk about why they can be considered a group, then create a name for the group. Phase number 4 and 5 identify and explain. Teachers ask the students to mention the basis on which they have categorized the vegetation. Pupils activity, student will verbalize their observation and may give their answers. Strategy, application of principles. Phase number हमारा 6 prediction. Teacher asks the students to verify the answer by supporting your answer. Teacher asks to verify characteristics of other group also. Pupils activity, students try to think and find out what there may be many problems in today's society. आप जैसे कि फर्स्ट जो हमने लेसन प्लान किया था उसमें जो हमारे फेसेस है उसके नेम बताए हैं. नेक्स्ट में जो हमारा थर्ड और सेकंड है उनमें ना ही बताओ तो कोई बात नहीं, अगर चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं माना तो नहीं लिख सकते. नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग और वैल्यूएशन. राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन. असाइनमेंट, कैटेगराइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. और इसी के साथ जो आपकी SST की TP फाइल के सभी टाइप के जो लेसन प्लान्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं. मैंने इंग्लिश के भी जो लेसन प्लान्स है वो कंप्लीट करवा दी और SST के भी. अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.